Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal ji. Honorable Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar Chaubey ji. Secretary Consumer Affairs, Shri Rohit Kumar Singh ji. Director General BIS, Shri Pramod Kumar Tiwari ji. Additional Secretary and Financial Advisor Consumer Affairs, Shri Shant Manoj ji. Senior officials from ministries, DDGs and heads of departments of BIS, esteemed delegates, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. I, Dr. Anil Kapi, Joint Director BIS, would be a host for this event, and it is indeed an honor for me to welcome you all to this celebration of the 76th Foundation Day of BIS. We as a family of BIS take pride in being exactly coherent with the age of independent India. As BIS, the erstwhile Indian Standards Institution, or the ISI, was off the mark on 6th January 1947, the very year India got its independence. The celebration today is a very special one, as we'll witness the launch of several important initiatives of BIS, which would help our organization to continue scaling newer heights for the larger well-being of the country people. इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे महानिदेशक महोदय श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी से कि वे कृपया माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, माननीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, आदरणीय सचिव उपभोक्ता मामले श्री रोहित कुमार सिंह जी, थैंक यू सर। विगत 76 वर्षों में समय के बदलाव के साथ कई नई प्रक्रियाएं, प्रस्तुतियां और प्रयोग देखे गए हैं। बीआईएस का उद्देश्य उद्योग और उपभोक्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरना है। इसी संदर्भ में आइए देखते हैं फर्स्ट इन बीआईएस पर बनी एक शॉर्ट फिल्म। सुनिश्चित करता है।
progress is changing at a very fast pace. Technologies are emerging, impact of climate change and sustainability concerns are resulting in severe consequences to be dealt with. Societal needs and expectations are rapidly evolving. Standards development, therefore, has to be based on strong foundation to meet these emerging challenges of the time and remain effective. Moreover, the BIS Act of 2016 has positioned us in a unique leadership position as the national standards body of India. Therefore, in order to effectively perform our responsibilities, the Standards National Action Plan, called by the acronym SNAP, has been evolved by BIS for the coming 5 years. So I would now like to request Honorable Minister Shri Piyush Goyal ji to kindly launch the Standards National Action Plan of BIS for 2022 to 2027. So. Moving ahead, the National Electrical Code of India, that is NEC 2023, is a comprehensive electrical installations code and is one of the most important publications by BIS. So before we go ahead with the formal launch of NEC 2023, I would like to invite Srimati Preeti Bhatnagar, Scientist F and Head of the Electrotechnical Department of BIS, for delivering a presentation on NEC. Madam. Thank you, Anil. Very good evening to all. I'll present a very short overview of the National Electrical Code of India, Special Publication 30, which has been recently revised and published in 2023. This is a comprehensive electrical installations code providing guidelines for good practices for selection of electrical equipment which are forming part of the electrical installations. This is the first step. Selection of an electrical equipment is the first step for good and safe installation to select an appropriate equipment with respect to various features like range, rating, current, voltage, etc. Then safety in wiring of electrical installations. As we all know, wiring is an integral part of any installation, whether permanent or temporary, and it is very essential that during the wiring installations, all safety measures, all safety norms are followed with respect to selection and installation both, like size and type of cables, size of conduits, it should not be jam-packed. Then earthing, MCBs, rating of MCBs is very important because if it is lower, it will trip more often, and if it is higher, it will not prevent accidents. Then it covers general safety procedures and practices in electrical work. This code was first published in August 1985. The first revision was taken up and done in February 2011, almost after a gap of 26 years. We took up the second revision much earlier, and in just 11 years, we were able to revise this NEC again and publish it in January 2023. Some facts and figures. Our sectional committee, Safety of Electrical Installations Sectional Committee ETD 20 has prepared this code. The revision process was initiated about 2 years back in January 2020. It took almost 2 years. It is a very voluminous document, around 800 pages to revise. The Central Electricity Authority, in its Safety Regulations 2010, in their Regulation 12, they have mandated its implementation for all the states. This code consists of 8 parts and 49 sections. More than 100 experts in 8 panels
with more than 50 meetings over the period of 2 years, have worked vigorously to bring this NEC in its present form. As I said, it consists of 8 parts. This is just a list of those 8 parts. Next is some of the changes in the latest version. Requirements with respect to lightning protection and earthing, which are very important aspects of any electrical installation. They have been updated and brought in line as per the latest international practices and latest Indian standards have been referred to. Some important new chapters, that is on electrical installations in special occasions like hospitals, community facilities, hotels, swimming pools, etc. They have been added. These are special areas which are more prone to accidents because there are more people, and then there are some availability of materials like oxygen in case of hospitals, etc. Water, as we know, is a bad conductor in the swimming pool. So these require special considerations which have been taken care of in NEC. The requirements related to power quality and energy efficiency design, etc. have also been covered to achieve goal on energy efficiency. So these are very few changes, nothing. I mean, exactly, this doesn't give anything. A lot of changes, a lot of updations have been brought about in the document. And thanks to everybody. This is a small introduction to the board. I would like to inform you all that the members, technical committee members who are present, who have made this revision, are present here itself. I would now request Honorable Minister of State Shri Ashwini Kumar Chaubey ji for releasing the National Electrical Code of India, that is NEC. Thank you. So, moving ahead, the National Building Code, that is NBC, and the National Electrical Code, that is NEC. These are the two most important and nationally relevant codes published by BIS. In pursuance of Honorable Prime Minister's emphasis on developing government functionaries as Karmyogis and the directions of the Honorable Minister to develop NITS Noida, the Training Institute of BIS, as the Center of Excellence for Training on Standardization, several steps have been taken by BIS, and in its endeavors in this direction, BIS has developed 6 new training courses on the NBC and 1 training course on NEC, with the promise to keep adding more of such relevant training courses in the future too. So with that, I would now like to request Honorable Minister Shri Piyush Goyal ji to kindly launch these purposefully designed training courses on National Building Code and the National Electrical Code. Sir. Thank you, sir. We believe these training courses would greatly benefit the civil and the electrical engineers of various government departments and the electricity boards, in addition to contractors, builders, and architects. Moving ahead, standards clubs. These have been a major initiative towards inculcating quality consciousness amongst youth and to prepare the students of schools and colleges as brand ambassadors of quality. In these endeavors of BIS, more than 4,000 standard clubs with nearly 1 lakh members have been formed so far. For the orientation, a special film has been prepared by BIS. I would request Honorable Minister of State Shri Ashwini Kumar Chaubey ji to kindly launch the orientation film of BIS on Standards Club. Sir.
strives to be of quality and standard, right? Okay, we have experts from the Bureau of Indian Standards who will explain the theory of quality and standards and present a glimpse into the wonderful world of standards formulation. So are you ready to know more about standards? Yes, sir. Okay, let us learn what quality means and how it is related to standards from Sri H.J. Pasricha, Deputy Director General, BIS. Quality in its simplest form can be defined as fitness for purpose. Okay, can we? This has many attributes depending. Yeah. So that's about the film on orientation film on standard clubs, and we hope that this will definitely prepare the students of the country as brand ambassadors of quality. Moving ahead, Honorable Minister has always laid emphasis on creation of a centralized platform for information on industrial units and laboratories in the country. The two important objectives are enabling gap analysis of test facilities in the country and helping entrepreneurs in accessing information about testing facilities. BIS accordingly took up this exercise with the help of BIS AG Ahmedabad. So we would now be requesting Honorable Minister Shri Piyush Goyal to kindly launch the BIS portal for mapping of industrial units and laboratories. Sir. Effective use of this portal. So, the National Building Code of India 2016, NBC 2016, is a prestigious publication of BIS, which is intended to help regulate and guide the building construction activity in the whole of the country. The code is widely used by various stakeholders such as building regulatory departments, government construction departments, builders, developers, private construction agencies, academic institutions, and R&D organizations. The country is on the path of rapid urbanization and development, and in the process, it is witnessing use of various new construction technologies and building materials, both from India and abroad. Therefore, with a vision to imbibe the latest developments in the field, BIS, through its National Building Code Section Committee CED 46, is now initiating the mammoth exercise of revision of the National Building Code of India. We would now request Honorable Minister of State Shri Ashwini Kumar Chaubey ji for kindly inaugurating the revision exercise of NBC. Sir.
expect every stakeholder to effectively contribute to their comments to the revision of this standard, so that we end up having an updated and a more robust national building code. Our next program this evening would be interaction with the volunteers of Quality Connect. Quality Connect is a program for involving the youth in spreading the message of quality and importance of standards. Another objective of this program is to empower consumers with information on products under mandatory certification. The first round of Quality Connect was conducted on World Standards Day, involving more than 4,000 students covering nearly 1 lakh households. The second round of Quality Connect is happening today on the BIS Foundation Day, with involvement of 20,000 students across the country, which is expected to cover 5 lakh households. But before the Honorable Minister speaks to the volunteers, we want to show you a short clip on Quality Connect program. Okay. Skipping that, maybe now connect with some of the volunteers whom we call as Manak Mitra of the Quality Connect program, who would be interacting with the Honorable Minister. I request the technical team to kindly connect with the volunteers so that they can interact with the Honorable Minister. And maybe connect with our first volunteer, Ms. Yesha from Surat, through our BIS officer, Mr. Abhishek Naidu. येशा जी नमस्कार। आज आप हमारे स्थापना दिवस समारोह में हमसे जुड़ रही हैं। I can understand how lucky you would be feeling as the Honorable Minister Shri Piyush Goyal ji would be speaking to you now about Quality Connect. Over to you, Mantri ji. Hello beta, how are you? I'm fine, sir. कहाँ पर हो? सूरत में? અંકલેશ્વર. અંકલેશ્વર. અને આજે શું કર્યો? સ્ટેન્ડર્ડ્સ ડે માં સંપર્ક કર્યો લોકોનો? સર અવાજ ક્લિયર નથી આવતો. અચ્છા, તમે આજે શું કર્યો? સ્ટેન્ડર્ડ્સ ડે માં તમે લોકો જોડે વાત કરી સ્ટેન્ડર્ડ્સ માટે, સ્ટેન્ડર્ડ્સ ની ઇમ્પોર્ટન્સ માટે? હા. Did you get a chance to interact with families about national standards? यस सर, मैंने बात की, सबसे बात की. क्या रिस्पॉन्स था? लोगों ने क्या बोला? लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि लोगों को जागरूकता मिली, लोगों को अच्छा लगा कि उन्हें कुछ नया जानने को मिला कि नहीं ये सेफ है, ये हमारे काम का है, इससे हमें आपको भी अच्छा लगा कि आप कुछ नई चीज कर रहे हैं, नई चीज सीख रहे हैं? मैंने लोगों को अवेयर किया. कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? मैं बीकॉम स्टूडेंट हूँ, एसएस सेकेंड ईयर में. बहुत बढ़िया। और आपको लगता है कि अगर पूरे देश में स्टैंडर्ड्स सब लोग अपनाएंगे तो फर्क पड़ेगा? सर बहुत फर्क पड़ेगा, इससे तो वो कम हो जाएगा और इससे आगे जो इन फ्यूचर भी ये बहुत काम आता है. और इससे जो ये ऐप है BIS का ऐप, इसमें और अगर कुछ नया आए तो उससे लोगों को आसानी होगी. बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर. थैंक यू सर। तो ये हमने देखा कि कैसे हमारे इस क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत हम लोग देश के बच्चों से जुड़ पा रहे हैं, देश की जनता से जुड़ पा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए हम लोग आगे चलते हुए हमारे दूसरे मानक मित्र से जुड़ते हैं, मिस्टर आदित्य साहा कोलकाता से, जो हमसे हमारे BIS ऑफिसर मिस्टर शुभांशु सेन के माध्यम से जुड़ेंगे। मिस्टर आदित्य साहा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आदित्य? हाँ सर। आई ऑल्सो बिलीव, मैं जानता हूं कि आपको भी काफी खुशी मिल रही होगी, लकी फील हो रहा होगा कि आप आज हमारे माननीय मंत्री जी से वार्तालाप कर पा रहे हैं क्वालिटी कनेक्ट के बारे में। मंत्री जी। आदित्य जी, आप क्या करते हैं? सॉरी सर, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यस सर,
किस क्लास में? मानव मित्र, मैं डॉक्टर शहा, मैं शाहबुद्दीन कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस इन 3rd ईयर में हूँ सर। अच्छा, तो आज क्या किया? क्वालिटी कनेक्ट में लोगों से संपर्क करने का मौका मिला? हाँ सर, मौका मिला। मैं अभी तक 15 घरों में विजिट कर चुका हूँ। उसमें से 11 घर ऐसा है जिनमें से मैं पॉजिटिव रिप्लाई पाया हूँ, और जिनमें से 4 ऐसे घरों में वो लोग थोड़ा कोऑपरेटिव नहीं था, और कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। ये तो ठीक है, समय लगेगा लोगों को जागरूकता आने के लिए। हाँ सर। पर आपको लगता है क्वालिटी का जितना हम प्रचार करें, जितना लोगों को जागरूकता है, उससे देश का आगे का भविष्य अच्छा बनेगा? हाँ सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। आगे भी आप क्वालिटी के संबंध में काम करेंगे आगे चल के? हाँ सर, मेरा बहुत इच्छा है। मैं ऐसा मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली काम करूँगा। आप कुछ बताना चाहें? यहाँ पे सब बड़े बड़े अधिकारी भी बैठे हैं, BIS स्टैंडर्ड से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे लोग इस कमरे में, आप कुछ बताना चाहेंगे इनको? Sir, I feel this campaign is going great, and there is one thing that campaign should add. This campaign should add that we are doing on a household level. That we are going to door-to-door campaign on a household. If this campaign is taken to a shop, or we make the shop person aware of this quality standard, then it will be much better. That's a very good idea. Thank you, Mrs. Shah. That's a good idea. इसको हम आगे बढ़ाएंगे अभी. Very good. Keep it up. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू आदित्य जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के, और ये जो फीडबैक आपने दिया है इसको मंत्री जी ने नहीं, हम सभी ने यहाँ पे बहुत इसकी सराहना की है, सो थैंक यू वेरी मच। मे बी नाउ कनेक्ट विद आवर थर्ड वॉलंटियर और मानक मित्र मिस्टर अब्दुल सत्तार फ्रॉम चेन्नई थ्रू RPS ऑफिसर मिस्टर दिनेश राजगोपालन। अब्दुल सत्तार जी, आप क्या हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? मैं जानता हूँ आपके लिए भी बहुत ये गर्व का विषय होगा कि आज माननीय मंत्री जी आपसे क्वालिटी कनेक्ट पर बात करेंगे। मंत्री जी। जी, मैं बहुत प्राकृतिक फील करता हूँ। थैंक यू। बहुत धन्यवाद अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू। What do you do in Chennai, beta? Are you a student? जी। आप स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट ऐसा या जी, मैं 2 ईयर में पढ़ता हूँ, B.Com ये। क्या किया आज आपने क्वालिटी कनेक्ट में? जी, मैंने यहाँ के गृहस्थी में जाकर बात की, ये 10 से 15 मिनट गया था, और मुझको तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इसलिए। लोगों को क्या बताते हैं आप क्वालिटी के बारे में? जी, क्वालिटी के बारे में देखा था, उनके एक बहुत इसे फर्स्ट वो जस्ट बोल रहे थे, वो आपको बहुत इंटरेस्ट से सुनने लगे थे, क्योंकि हर एक किसान आपकी सेफ्टी के लिए पहले आता है, इसलिए जब भी मैंने जाकर आपसे बोल रहे थे, वो आपको बहुत दिलचस्पी से सुनने लगे थे मेरे, तो मुझे बहुत खुश हुआ ये BIS का स्टेप उठाना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत अप्रिशिएट करता है। आगे भी आप क्वालिटी के काम में जुड़ेंगे? जी, जरूर, ये बहुत गर्व की बात होगी अगर आप मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी से आते हैं। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू अब्दुल सत्तार जी। इन इंटरेक्शन से हमने आज ये देखा कि किस प्रकार मानक मित्रों के द्वारा हम घर घर में क्वालिटी और मानकों की जागरूकता पहुंचाने में सफल हो पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आज कई सारे इनिशिएटिव्स देखे जो यहाँ लॉन्च किए गए, और ये सब संभव नहीं हो पाता एक एबल विजन और लीडरशिप के एब्सेंस में, और हम बहुत बहुत आभारी हैं DG BIS श्री प्रमोद कुमारी तिवारी जी के, कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से लीड किया और हम सक्सेसफुल हो पाए इन सबको अचीव कर पाने में। तो इसी के साथ आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल DG सर टू काइंडली शेयर हिज थॉट्स ऑन दिस डे। सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट शांत मनु जी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स,
I know many of you actually are the reason why we have been able to do so many things in BIS. Sir, the chairperson and members of the committees which are working on it, the NEC and NPC, they are also here. So, my sincere, I am obliged to all of you and welcome you. BIS में हम लोग जो आपने देखा होगा स्टैंडर्ड्स बनाने में तो हमारी स्किल एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन जिस चीज पे हम लोग अब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडस्ट्री की नीड्स पे बेस्ड हो, उसके लिए हमें इंडस्ट्री के साथ क्लोजली काम करना है। हमारे जो यूजर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो और इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स, उनके साथ हमें जुड़ना है। क्वालिटी समाज में तभी आएगी व्हेन कॉमन पीपल स्टार्ट डिमांडिंग क्वालिटी। उसके लिए ये सारे इनिशिएटिव्स जो आउटरीच प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स क्लब हो, चाहे मानक मंथन हो, चाहे ये और बहुत सारे दूसरी गतिविधियां हैं। और मुझे पूरा विश्वास है और मैं हमारे आज भी जब मैं सर को बता रहा था कि जब हम लोग इस हॉल में ये चर्चा कर रहे हैं, हमारे 20,000 यूथ, approximately 20,000 youth are in the field, visiting households, talking to people about quality, standards and all these things. And I'm quite confident that if we keep working like this, it should not take long before our country achieves that goal of becoming or coming up as a quality conscious country. तो इससे ज्यादा मैं और नहीं बोलूंगा because I know Honorable Minister of State and Minister are here and we all want to hear them. So thank you very much. We have the pleasure of having with us today Shri Rohit Kumar Singh, Secretary Consumer Affairs, who is an IAS officer of the 1989 batch, Rajasthan cadre. May I now invite Shri Rohit Kumar Singh ji for sharing his thoughts on today's event. Sir. माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, डीजी BIS प्रमोद तिवारी जी, शांतनु जी, निधि खरे जी, other senior officers of the ministry and the BIS, honorable members from the industry, respected Sudhir Krishna sir. First of all, let me congratulate all of you on behalf of the BIS Day. It's a great occasion. और अभी माननीय मंत्री जी मेरे कान में कह रहे थे कि BIS आपकी बहुत पावरफुल बॉडी है और इसको आप और अगर नर्चर करें और एंड ही वाज आल्सो प्रेजिंग द लीडरशिप ऑफ डीजी प्रमोद तिवारी जी, इसको और नर्चर करके इसको और उपयोगी सबके लिए बनाया जाए। एंड एज वी सॉ नॉट ओनली फ्रॉम द सप्लाई साइड on the development of standards and the engaging the industry, there is a huge effort happening on the demand side, which is the creating consciousness for standards, जो इनके स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड्स क्लब्स हैं और अभी जो हमने इंटरेक्शन देखा माननीय मंत्री जी का 3 वॉलंटियर्स के साथ, इसके अलावा भी जो इनकी आउटरीच की एक्टिविटी है उस पर भी ये ध्यान दे रहे हैं और इससे बड़े अच्छे परिणाम आएंगे। बिकॉज अनलेस वी हैव कॉन्शियसनेस इन द कंट्री ऑन स्टैंडर्ड्स, अभी स्टैंडर्ड बनाने से काम नहीं चलेगा। पीपल शुड स्टार्ट डिमांडिंग स्टैंडर्ड्स। और इस विषय में केवल दो छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अभी माननीय मंत्री जी ने पिछले कुछ समय से हम लोग काफी इंटेंसिटी के साथ ये कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा QCOs का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स अन्य मिनिस्ट्रीज के साथ एंगेज करके निकालिए। QCOs जब आ जाएंगे तो जो वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स हैं दे विल बिकम मैंडेटरी और उससे जो भी प्रोडक्ट्स उनमें कवर होंगे उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। हम लोग सर आपके निर्देशन में ये एक्सरसाइज बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। कल भी हमने डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स के साथ बहुत लंबा एंगेजमेंट किया। DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, जो आपकी अपेक्षा है सर जिस गति से उस गति से अभी तक हम शायद नहीं कर पाए, बट मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मंत्रालय और BIS की ओर से कि अगले कुछ समय में हम इसको और गति देकर और इसमें जो कंपलसरी पीरियड है जैसे WTO का 60 डेज का या बाकी जो कंसल्टेशन का टाइम है उसको स्क्वीज करके जल्दी से जल्दी QCOs ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिनिस्ट्रीज को के साथ एंगेज करके जारी करवाएंगे। दूसरी बात सर, BIS like the world is changing,
It's a very dynamic world. Geopolitical situations are changing. The trade equations are changing. The tariff barriers are going, and standards are becoming the non-tariff barriers or non-tariff facilitators. So we have to keep up with what is happening in the world. So BIS also has to transform itself and align itself with the best, what is happening at the best in the world. तो सर BIS के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी है और BIS का जो रोड अहेड है आगे क्या होना चाहिए और अब जुडिशियस बैलेंस बिटवीन हैंड होल्डिंग, फैसिलिटेशन, रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट, इसका क्या मिक्स होना चाहिए बिकॉज ट्रेड बदल रहा है, दुनिया बदल रही है. So we can't just be enforcer, we have to handhold like we just saw, we have to facilitate, we have to regulate, and then if nothing happens then we have to enforce with an iron hand. उसका क्या मिक्स होना चाहिए, आगे की क्या दिशा होनी चाहिए, इस पर भी हम काम कर रहे हैं सर. और जैसा आपने कहा BIS बहुत पावरफुल बॉडी है, आगे इसका रोल और भी इम्पोर्टेंट होगा, बट द काइंड ऑफ लीडरशिप वी हैव नाउ एंड द काइंड ऑफ एक्सीलेंट ऑफिसर्स दैट वी हैव BIS, we hope sir we meet up with your and country's expectation to let India become a quality conscious country. Thank you sir. Thank you sir for your encouraging words which would further guide us in our endeavors and our action plans. हमारा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हमारे समक्ष उपस्थित हैं माननीय राज्य मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन एवं भारतीय मानक ब्यूरो के उपाध्यक्ष यशस्वी एवं लोकप्रिय माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी. माननीय राज्य मंत्री जी की BIS के प्रति रुचि इस बात से झलकती है कि वे समय समय पर BIS की गतिविधियों पर अपना अमूल्य मार्गदर्शन देते रहे हैं एवं उन्होंने इसी संदर्भ में BIS के कई ब्रांच ऑफिस का भी दौरा किया है. मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय राज्य मंत्री जी से कि वे कृपया आज BIS के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कृपया अपने उद्बोधन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें. सर आज इस BIS के स्थापना दिवस पर यहाँ उपस्थित हमारे माननीय यशस्वी मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, सचिव रोहित कुमार जी, महानिदेशक भारतीय मानक ब्यूरो के श्री प्रमोद कुमार तिवारी, हमारे सचिव सातमलू जी और साथ ही यहाँ उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, विशेषज्ञ और विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत ऐसे और सेवानिवृत्त अधिकारीगण भी, मैं सबको अपनी ओर से आज की संध्या में, जहां आज हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का स्थापना दिवस मना रहे हैं, भारतीय मानक ब्यूरो का, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं. आप जानते हैं और पुरातन काल से सदियों से यह बात कही जाती है कि समय परिवर्तनशील है और जब समय परिवर्तनशील है तो किसी व्यक्ति को या संस्था को अपने अस्तित्व को बचाए रखना और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वो समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्तित करना हो. समय मूल्यवान है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 19वीं शताब्दी यूरोप की थी, 20वीं शताब्दी वो अमेरिका की रही और 21वीं शताब्दी निश्चित रूप से सूचना एवं प्रौद्योगिकी की है, जिसमें भारत माहिर है, महारथी प्राप्त कर चुका है और 21वीं शताब्दी सूचना और प्रौद्योगिकी के अनुसार से हमारी भारत की है. जहां तक सूचना एवं प्रौद्योगिकी में जो परिवर्तन इस गति के साथ हो रहा है, जिसको हम लोग अनुभूति कर रहे हैं,
अभी जो आपने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया और आपने जिस प्रकार से अभियान चलाया, मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में पूरा विश्व भारत मानक ब्यूरो की ओर झुकेगा। और ऐसी स्थिति में जिस किसी भी संस्थान ने प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया, समय के साथ चलने का प्रयास नहीं किया है, उनका टिक पाना संभव नहीं होगा। हम सभी व्यक्ति का हम जानते हैं कि हम जन्म दिवस मनाते हैं और संस्था का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो जहां आप सबको भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस के इस अवसर पर जहां आपने नए नए अन्वेषण किया है, कई चीजों को आपने जोड़ने का काम किया है, आपने अवेयरनेस पैदा किया है, और जिसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण की माननीय मंत्री जी उन छोटे छोटे स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ बात कर रहे थे। कितनी बड़ी बात उन्होंने हमें सुझाव के रूप में दिया। ये इस बात का द्योतक है कि आपने देश में और आज 20,000 लोगों के साथ हम जुड़े, मामूली बात नहीं। 20,000 हमारे इस प्रकार से क्वालिटी को कितना गहनतम हमने स्थान दिया है। हमारा देश 1947 में आजादी को हासिल हुआ और तब से 6 जनवरी को ही ये स्थापना दिवस भी हमारा प्रारंभ हो गया। भारत मानक ब्यूरो का स्थापना विकसित हुआ और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया शास्त्र में कि जब व्यक्ति 76 वर्ष की अवस्था को पूरा कर लेता है तो वो आध्यात्म की ओर जीवन कल्पना और अपने शैशव या युवावस्था में नहीं रहा। आज बड़ा सुखद मौका है कि 76 वर्ष हमने पूरा किया है और उसी प्रकार से यह संस्थान स्थापना के समय भले ही भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जो बना हो कार्य करता रहा है और पिछले कुछ वर्षों में इसका जो दृष्टिकोण है वो न केवल व्यापक हुआ है अपितु वैश्विक रूप से इसकी परिणति हुई है। ग्लोबल हम कह सकते हैं। और भारतीय मानक ब्यूरो ने जो पिछले 8 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में आज जो हमने कुछ सीखा है, हमने कुछ जो किया है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमने प्रतिमान स्थापित किए और आज हमने जिन कारकों का अभी लोकार्पण किया गया उसके आधार पर भी मैं कह रहा हूं भारतीय मानक ब्यूरो ने मानक राष्ट्रीय कार्य योजना स्नैप 2019 में बनाया था और इसे विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श भी आपने प्रारंभ किया था। 3 वर्ष बाद ही 2022 विकसित किया गया इसमें और इस पंचवर्षीय योजना में जो 3000 से अधिक हितधारकों के साथ जो विचार विमर्श किए गए हैं, जिसमें सरकार, नियामक संस्थाओं, उद्योग जगत, उपभोक्ता संस्थानों, सिविल सोसाइटी, ऐसे अनुसंधान संस्थानों से अनेक निकाय शामिल हैं। इन सब का उद्देश्य हमारे आर्थिक विकास, व्यापार, सार्वजनिक नीति और नियमन, डिजिटल इंजीनियरिंग तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को हमने शामिल करने का काम किया है। विश्व में हमारे उत्पादों और सेवाओं की उपयोगिता, उपादेयता कैसे बढ़े, इस पर भी हमने ध्यान केंद्रित किया है। मेरे पास पर्यावरण मंत्रालय का भी दायित्व है। आज जलवायु परिवर्तन की समस्या पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है। कार्बन का उत्सर्जन और उसकी समस्या पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनी और मुझे ऐसा लगता है कि स्नैप 2022 में जो हमने कार्बन उत्सर्जन
जो प्रधानमंत्री जी ने कार्बन को नेट जीरो करने का 2070 में जो उन्होंने पूरी दुनिया के साथ जो संकल्प लिया है, तो निश्चित रूप से इस नेट 2022 में कार्बन उत्सर्जन, कार्बन फुटप्रिंट, संसाधनों के बेहतर उपयोग और चक्रीय अर्थव्यवस्था, यानी जो सर्कुलर इकोनॉमी है, उस दृष्टिकोण से हम कर सकते हैं। और जैव विविधता, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, उनके सभी पहलुओं पर हमने ध्यान रखा है। भारतीय मानकों को नई दिशा देने के लिए जो आपने विश्व स्तरीय बनाने के लिए आज ऐसे 8 महत्वपूर्ण कार्यों को आपने शुभारंभ किया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही काबिल तारीफ है। और आज शुरू किए जाने वाले इस 8 कार्यक्रम जो भारतीय मानक ब्यूरो को निश्चित रूप से नई ऊंचाई देने में मील का पत्थर शुरू होगा, इसमें कहीं दो नहीं। और